अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इंदिरामन्दिरं चेतसां सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे विष्णवे जिष्णवे शङ्किने चक्रिणे रुक्मिणे रागिणे जानकी जानये विल्लवी वल्लभायार्चिता आत्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविन्द हे रामनारायण श्रीपते वासुदेवार्चित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक राक्षसक्षोभित सीतया शोभितो दंडकारुण्यभू पुण्यता कारणः लक्ष्मणैनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त्य संपूजितो राघव पातु माम्। धेनुकारिष्टको निष्ठकृद्वेषिणां केशिहा कंसरध्वंसिका वादकः पूतना कोशकः सूरजा कीलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं प्रावृडद्भूतवत् प्रोलसद्विग्रहम् सौव्यया मालया शोभितो रस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चितैः कुन्तलैः व्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे। अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेम प्रत्ययहं पौरुषः सस्पृहम् रत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरं तस्य वक्षो हरिर्जायते सत्परम् इति अच्युताष्टकम्।